Liverpool and Everton, red and blue, one of the oldest rivalries in England. अगर हम इंग्लिश फुटबॉल की बात करें तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, काफी पुरानी राइवलरी है, काफी पुराना रिश्ता है इन दोनों क्लब्स के बीच में. और इन दोनों के बीच में जो स्प्लिट था, दैट वाज इक्वली एक्रिमिनियस. आज बात करेंगे थोड़ा हम लिवरपूल और एवर्टन का स्प्लिट कैसे हुआ, एंड वी विल बस्ट अ फ्यू मिथ्स. टू स्टार्ट विथ, वन ऑफ द बिगेस्ट मिथ्स इज दैट एवर्टन ओन्ड एनफील्ड, व्हिच इज नॉट ट्रू, एंड हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे. तो देखिए, ये कहानी शुरू होती है, एंड इस कहानी में वन ऑफ द सेंट्रल फिगर्स इज जॉन होल्डिंग, द फाउंडिंग फादर ऑफ लिवरपूल एफसी. एंड to Liverpool fans, for us, he's like a noble benefactor, and Everton are the cheapskates who did not pay their rent. And for Everton, वो जॉन होल्डिंग को एक अपॉर्चुनिस्ट समझते हैं जो ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं एवर्टन की पॉपुलैरिटी से. जो ट्रूथ है वो मैक्सिमम चीजों की तरह समवेयर इन द मिडिल है. ठीक है, तो हम शुरू करेंगे. ये साल था 1891, जब जो सिटी ऑफ लिवरपूल था, वहां पे सब जो रेनिंग चैंपियंस थे वो थे एवर्टन. एंड एवर्टन वाज द फर्स्ट क्लब इन लिवरपूल टू एग्जिस्ट, एंड इट वाज द ओनली क्लब एट टिल अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम. और बहुत सारे लोग शायद ये नहीं जानते हैं कि एनफील्ड से पहले एवर्टन यूज्ड टू प्ले एट प्रायरी रोड. प्रायरी रोड जहां पे कैपेसिटी कम थी, और 1884 में एवर्टन को मूव करना पड़ा एनफील्ड, जो कि आज लिवरपूल, which is Liverpool's home today. They had to move there because they were drawing crowds of around 14,000, 15,000. प्रायरी रोड पे आज एक पेट्रोल बंक है, जो कि सबसे पहला ग्राउंड था उस पर्टिकुलर स्टेडियम में. नाउ जब एवर्टन का बोर्ड बना, तो एवर्टन के बोर्ड में दो फैक्शंस थे. जॉन होल्डिंग की जो प्राइमरी जॉब था, he was a brewer. He was not completely involved in sports, and Liverpool used to be a port city, and there used to be a lot of people who used to come, and even the people for Liverpool, and और उसमें बहुत ही clearly differentiated था. जो बाद में रेड साइड बना, which had people like John Holding, Edwin Berry, John McKenna, William Barclay. These were the people that were on the red side, and these were the people that eventually formed Liverpool Football Club. But ये जो कहानी है, ये हम अभी भी ब्लू साइड में है, ये अभी भी एवर्टन है, तो हम पहले वहां जाएंगे. और जो दूसरे लोग थे उस पर्टिकुलर क्लब में, उसमें जॉर्ज महॉन, who was one of the central figures in the formation of Everton Football Club, Ben Chambers, Clement Baxter, Wilcoff, William Whitford, and William Clayton. ये लोग थे who were slightly different, and they believed that drinking and being in that particular business was not really good. तो प्रायरी रोड की हमने बात की. जब हम 1884 में, वहां पे क्या हुआ कि एवर्टन, बिकॉज जो कॉस्ट था टू बिल्ड अ न्यू स्टेडियम फॉर एवर्टन, द टीम देन, bear in mind Liverpool did not exist till now, right? Liverpool Football Club did not exist till now. तो उन्होंने बोला कि जॉन होल्डिंग जो थे वो, he was the most, अभी मैंने कुछ 7-8 लोगों का नाम बोला, उसमें he was the most influential, he was the most rich man. So एवर्टन का जो बोर्ड था, बेसिकली जो फुटबॉल क्लब का बोर्ड था, उन्होंने बोला कि आप ये क्लब खरीद लीजिए, बिकॉज we cannot afford to build a new stadium, it is too expensive. बट जॉन होल्डिंग को इस कोई गारंटी नहीं दी गई, और उनको बोला गया कि आपको साल का मैक्सिमम 100 पाउंड्स का रेंट आएगा. बट बिकॉज जॉन होल्डिंग डिड नॉट वांट द क्लब टू क्लोज डाउन और एवर्टन कंटिन्यू करे, इसके लिए उन्होंने अग्री किया. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज जॉन होल्डिंग वाज आल्सो द ओनर ऑफ सैंडॉन, which is a very important piece of history. आज अगर आप एनफील्ड की बात करो, तो there is a pub just next to Anfield called Sandon. It was owned by John Holding, and in 1889, after Sandon became very successful, John Holding ने दूसरा भी एक second pub चालू किया लिवरपूल सिटी में, right? Now अब हम वापस आते हैं उस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर, एनफील्ड के ऊपर. तो एनफील्ड जो ग्राउंड था वो जॉन होल्डिंग ने खरीदा था from a person called Joseph Orrell. Now Joseph Orrell had got it as he had got it as he had inherited that land.
उनको इनहेरिटेंस में मिला था, और वो उन्होंने कमिट किया ठीक है आप ये लैंड खरीद लो, बट ही आस्क्ड फॉर अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू बी डोनेटेड टू हिम and a certain sum of money to go to a hospital which was based in Liverpool at that particular time. Now, Everton became very successful. Like I said, 1891 mein they won the the English Championship, first division champions थे, but जॉन होल्डिंग को काफी कम पैसा आ रहा था जिस हिसाब से एवर्टन वर गेटिंग टिकट्स एंड अदर प्राइज मनी. जॉन होल्डिंग वाज रिसीविंग सब कुछ मिला के अराउंड 250 पाउंड्स पर ईयर. And that's when John Holding suggested that Everton should be formed into a company, and that's how it should be run, because as a football club run करने में उनको मतलब John Holding was a businessman, so he was saying that मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है. विलियम क्लेटन जो कि ब्लू साइड में थे, जो बाद में एवर्टन के पार्ट बन गए, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस चीज से हुई, और तब ये डिवीजन बहुत क्लियरली बन गया. ब्रूअर्स, जॉन होल्डिंग, एडविन बेरी, जॉन मैकेना, विलियम बार्कले और जॉर्ज महन, बेन चैम्बर्स, क्लेमेंट बैक्स्टर, ये एक अलग डिविजन्स बन गए. ये ब्रूअर्स वर्सेस टी टोटलर्स का एक फैक्शन क्रिएट हो गया. बट फिर भी जो बोर्ड की मेजॉरिटी थी वो अभी भी जॉन होल्डिंग के साथ थी. नाउ जब ये कंपनी फॉर्म होने की बात हुई तो जॉर्ज महन, एक चीज जॉन होल्डिंग को नहीं पता थी कि जॉन महन वाज ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटिंग अ न्यू साइट अक्रॉस स्टैनली पार्क, and that site was called Goodison Park, because the cost for maintaining Goodison Park or creating a stadium was around 50 pounds a year or something, which was much less compared to what they had to pay John Holding for keeping that particular ground. Now Holding said no, we should continue at Anfield, and blue side ने जो एवर्टन की साइड थी, वो बेसिकली जो दो फैक्शंस क्रिएट हो गए थे, अभी तक रेड साइड नहीं क्रिएट हुई है, बट बेसिकली देयर वर टू फैक्शंस विद इन द एवर्टन बोर्ड. उनको ये लगा कि ही वांट्स टू बी एट एनफील्ड बिकॉज इट इज क्लोज टू सैंडॉन, एंड ही बीइंग अ बिजनेसमैन इज थिंकिंग ओनली अबाउट मनी, व्हिच मे बी द ट्रूथ, मे नॉट बी द ट्रूथ, हम नहीं जानते हैं. बट जॉन होल्डिंग was very much in favor of keeping the grounds at Anfield. Now 1891 में tensions काफी increase हुए because Everton were not ready to increase the rent for Anfield for John Holding, and ultimately John Holding ने बोला कि आप Anfield खाली कर दीजिए. Him being the owner of the land, he asked Everton to vacate that particular premises. George Mahon and his group, they went ahead and formed Everton Football Club Limited, which is a limited liability company. And it seemed at that particular time that the tensions have been eased and John Holding would stay on as a president. He was still the president of Everton. But uske agle kuch hi dinon mein John Holding moved to form Everton Football Club and Athletic Ground Company. जी हाँ, लिवरपूल फुटबॉल क्लब का जो पहला नाम था वो था एवर्टन फुटबॉल क्लब एंड एथलेटिक ग्राउंड कंपनी, राइट. एंड जॉन होल्डिंग इसके बाद, बिकॉज टेंशंस काफी बढ़ गए थे, एंड जॉन होल्डिंग हैड ऑलरेडी फॉर्म्ड दिस कंपनी बट नॉट द टीम, there was a voting that was done in an annual general meeting, and John Holding was removed from the presidency of Everton Football Club. And उसके बाद जॉन होल्डिंग ने तुरंत ही वहां से मूव किया. काफी डिस्कशंस हुए थे उसके बाद भी, जिसकी कहानी काफी लंबी है एंड हम काफी डिटेल्स में नहीं जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में. बट लिवरपूल फुटबॉल क्लब, दैट्स व्हेन ही सॉ the writing on the wall that they don't want him around the club, and that's when he formed Liverpool Football Club. Liverpool went on to become much more successful than Everton, and Everton kept the name, but they have not been as successful as as Liverpool Football Club they were not as successful in the coming years. तो ये थी कहानी, और ऐसे बॉर्न हुई ये राइवलरी. एक बहुत और इंटरेस्टिंग बात है कि लिवरपूल ने जब खेलना शुरू किया था, वी एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग इन अ ब्लू किट, एंड एट सम पॉइंट एवर्टन वर प्लेइंग इन अ रेड किट. सो देयर वाज अ पॉइंट व्हेन लिवरपूल वाज ब्लू एंड एवर्टन वाज रेड. लिवरपूल रेड कैसे हुआ? हाउ डिड दैट kit come into picture, which is basically the red shirt, red shorts and red socks? उसकी कहानी अलग है, हम एक और वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे. बट दिस इज हाउ John Holding formed Liverpool Football Club. This is the whole basis
of the split between the two clubs. It is one of the oldest rivalries in England. तो ऐसे डिवीजन हुआ, ऐसे स्प्लिट हुआ दो क्लब्स के बीच में. काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एवर्टन नेवर ओन्ड एनफील्ड. इट वाज ऑलवेज ओन्ड बाय जॉन होल्डिंग, who was not really favored by the side that eventually became Everton's board. So that's the story. Please let us know in the comment section, did you know this about Liverpool Football Club or not? If there are any other topics that you want us to cover in the history of Liverpool or anything as such, hum zarur cover karenge. But this was Menace in the Monk. Thank you for watching this. Cheers and up the Reds.